Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing great. So as you know, in this video I'm gonna talking about after Holi some tips and tricks for skin and hair. Now start the video and make your hair and skin soft and happy. Oh, one more thing. Watch my full video, subscribe my channel, also like, comment and share my video. And let's start the video. होली खेलने के बाद अच्छे से बालों को शैम्पू कीजिए. If possible then apply deep conditioning mask. Otherwise just apply conditioner and next day mask apply कीजिए. For DIY deep conditioning masks, watch my 7 hair problem 1 miracle solution video. I will give the link in description. फर्स्ट ड्राई क्लॉथ की हेल्प से कलर रिमूव कीजिए एंड देन अच्छे से फेस को क्लीन कीजिए विद द हेल्प ऑफ माइल्ड फेस वॉश. एंड देन सेकेंड टाइम क्लीन योर फेस विद मिल्क एंड एलोवेरा. Take 2 tablespoons of raw milk and half tablespoon of aloe vera. Take it on a cotton pad and gently massage for 2 to 3 minutes. Next step is scrubbing. Take 1 tablespoon of coffee, 1 tablespoon grounded sugar and 3 to 4 drops of coconut oil. Coffee exfoliate your skin, remove tan and deeply clean your skin. Sugar also exfoliate, remove dead skin cells, clogged pores and gives a glow. Coconut oil moisturize your skin. Scrub it for 5 minutes and wash your face with normal water. The last step is applying face pack. For face pack raw milk ले लीजिए, बेसन ले लीजिए and एक चुटकी हल्दी पाउडर ऐड कर लीजिए. Make a paste and apply it. Wait for 10 minutes then wash your face. गलती से भी कुकिंग वाला हल्दी यूज मत करना. You can use this turmeric or you can purchase turmeric powder. If you watch my before Holi tips video then you definitely apply lipstick. So अच्छे से lipstick को remove कीजिए. वेस्लिन या फिर कोकोनट ऑयल की हेल्प से लिपस्टिक रिमूव कीजिए. देन वो कॉफी वाला फेस स्क्रब एज अ लिप स्क्रब यूज कर लीजिए.
पहले अच्छे से बॉडी को क्लीन कर लीजिए एंड देन वही फेस मास्क को अप्लाई कर लीजिए एंड मसाज इट फॉर 5 मिनट्स। Milk remove dirt from your skin and moisturize your skin. हल्दी स्किन टोन इवन करने में हेल्प करता है एंड डार्क स्पॉट को भी लाइटन करने में हेल्प करते हैं। So I hope you enjoy the video and find them useful. Thank you for watching.